Hi friends, I have been a CFO in the corporate world. उससे क्या होता है कि वी आर द मैनेजमेंट. हम लोग कंपनी का फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, गाइडेंस, ग्रोथ के ये सब इन्वेस्टर्स को बताते हैं. नाउ व्हेन आई एम ऑन द रिसर्च साइड, दैट गिव्स मी एन एडेड एडवांटेज टू बी एबल टू लुक एट द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड द लाइक्लीहुड ऑफ द गाइडेंस एक्चुअली हैपनिंग. दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपके जो शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, ETFs रहते हैं वो कहाँ पे स्टोर होते हैं, बैकएंड क्या होता है? तो आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक और कंपनी के बारे में बात करेंगे जो सीधी स्टॉक मार्केट्स, सिक्योरिटीज मार्केट से लिंक्ड है. सो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज अ डिपॉजिटरी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल सिक्योरिटीज, फाइनेंशियल एसेट्स. तो डिपॉजिटरी का काम क्या है? दे फैसिलिटेट होल्डिंग एंड ट्रांजैक्टिंग इन सिक्योरिटीज इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट एंड फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ ट्रेड्स. मतलब एक बार आपने कुछ स्टोरेज ले लिया तो जब भी फ्रंट एंड में उसका बाइंग, सेलिंग, कोई भी टाइप के चेंजेस होते हैं तो उस सिक्योरिटीज़ को फिर उस तरह से चेंज करना, प्रोवाइड करना, वो सब करते हैं. तो यहाँ पे हमने एक सिंप्लीफाइड तरीके से दिखाया है कि अगर आप इन्वेस्टर हो तो यू वुड बी ओपनिंग अ डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट विथ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स बोलते हैं जिनको, जैसे ग्रो, मोतीलाल ओसवाल, जीरोडा. आपको ये लोग सर्विसेज देते हैं जो आपका ट्रेडिंग फैसिलिटेट करते हैं और आप इनको फीस देते हैं. डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के लिए बैकवर्ड इंटीग्रेशन में डिपॉजिटरीज है, तो जो इनको ये सब स्टोरेज और अलग अलग टाइप के सर्विसेज देते हैं, सिक्योरिटाइजेशन देते हैं आपके सिक्योरिटीज़ का, एंड इनसे फीस लेते हैं. अभी इंडिया में सिर्फ 2 डिपॉजिटरीज है, वन इज CDSL एंड वन इज NSDL. सो हर एक ट्रेड, हर एक शेयर, जब भी यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शन होता है बिटवीन अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एंड वेदर डिपॉजिटरी हैज टू डू सम वर्क, वहाँ पे एक फी फ्लो होती है डिपॉजिटरीज को. इट इज़ लाइक अ डिजिटल पार्किंग विद अ टोल. मतलब एक मॉल और एक कमर्शियल बिल्डिंग जब कंस्ट्रक्ट हो जाती है और उसका एक पार्किंग लॉट बनता है, तो एवरी टाइम अ कार कम्स देयर दे विल हैव टू पे अ सर्टेन फी, देन ओनली दे कैन गेट इन एंड गेट आउट. सो वहाँ पे जितने भी कार्स आएंगे उनको देना ही पड़ेगा. सो CDSL NSDL के लिए जब भी कैपिटल मार्केट ट्रांजैक्शंस होते हैं तो उनको एक कैप्टिव ऑडियंस मिलता है जिससे फीस मिलते रहते हैं. सो व्हाट आर वी गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे? विच कंपनी? इट इज CDSL. सो जैसे हमने देखा, ये डुओपोलिस्टिक इंडस्ट्री है एंड इन द लास्ट डिकेड द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन द स्टॉक मार्केट, दैट इज ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, एक्सेट्रा, similarly on the other side issuers of these securities, has simply gone through the roof. So the markets achieved a historic milestone of crossing a market capitalization of $5.7 trillion in September 24 last year. Average daily turnover भी जो था वो previous year से 37% बढ़ के 1,20,000 crore हो गया. मतलब एक दिन में 1,20,000 crore के सिक्योरिटीज की एक्सचेंज होती है, की सेलिंग होती है, बाइंग होती है. India has added a record 4.1 crore demat accounts in FY25, taking the total number of accounts to 19.24 crores as on 31st March 25. So these are very big numbers, and जैसे कि हमने देखा है ये सब ट्रांजैक्शंस का पॉजिटिव इफेक्ट होगा कि CDSL को बहुत सारा बिजनेस ग्रोथ मिला है. CDSL के एडवांटेजेस क्या है? ऑपरेटिंग इन अ ड्यूओपोली काइंड ऑफ मार्केट, जहाँ पे इनको ऑलमोस्ट एक मोनोपोली है एज फार एज ट्रांजैक्शंस आर कंसर्न, क्योंकि मार्केट शेयर इनका 79% है. देयर हैव बीन नो न्यू डिपॉजिटरी लाइसेंसेस व्हिच हैव बीन इशूड आफ्टर 1999, यानी 25 साल हो गए. CDL एक्सपीरियंस 32% ग्रोथ इन द नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स, और जो टोटल 19 ऑड करोड़ अकाउंट्स है उसमें से 15.3 करोड़ तो सिर्फ CDSL के पास है. They've got very high operating margins of 60%. और जो न्यू फिनटेक ब्रोकर्स आ रहे हैं जैसे जीरोडा अभी फेमस है, ये CDSL को अपना डिपॉजिटरी पार्टनर चूज किया है. सो वॉरेन बफेट का एक फेमस कोट यहाँ पे आपको बोलता हूँ, द बेस्ट बिजनेस इज अ रॉयल्टी ऑन द ग्रोथ ऑफ अदर्स रिक्वायरिंग वेरी लिटिल कैपिटल इटसेल्फ. तो इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पे भी दूसरा कोई हाईवे बना हुआ है, जहाँ पे हाईवे फॉर ग्रोथ, कोई सेक्टर बहुत जोर से चल रहा है, वहाँ पे उसी बिजनेस पे आप राइड करके एक हाई ग्रोथ बिजनेस कर सकते हो विदाउट एनी रियल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड.
अब बाद में फाइनेंशियल्स में देखेंगे कि ये कितनी बड़ी कैश रिच कंपनी है। CDSL के कुछ वाइटल इंपॉर्टेंट आपको फीचर्स बताते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन इज 35,000 crores, revenue has crossed 1,000 crores in FY25, established in 1999 and operates under the regulator SEBI. It has been listed on the NSE since June 2017 and is the first and the only listed depository in Asia Pacific. It serves exchanges like BSE, NSE, clearing corporations, depository participants जो हमने देखा, and issuers of securities and the investors who buy and deal in them. So CDSL is not limited to equities, debentures, bonds, ETF, mutual funds. इनकी जो subsidiaries है, Centrico and Countrywide Commodity, they also do with dematerialization in other sectors. So IRDAI, which is the Insurance Regulatory Authority, उनके regulations के अंडर इंश्योरेंस रिपोजिटरी भी करते हैं. सो ई इंश्योरेंस अकाउंट्स भी ये लोग डीमटेरियलाइज्ड फॉर्मेट में सर्विस देते हैं. सिमिलरली कमोडिटी रिपोजिटरी चालू हुई है जो इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट्स को स्टोर करने का काम करते हैं. कंट्री वाइड कमोडिटी रिपोजिटरी जो इनकी सब्सिडियरी है. सो CDSL is the biggest beneficiary of the capital markets growth and the dematerialization of assets that has happened in the last 2 decades. A quick look at the milestones. So 2002-2004 में CDSL ने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया. ईजी और ईजीएस्ट मतलब तब तक ऐसा था कि अगर आपको आपके डीमैट अकाउंट में कौन से शेयर्स पड़े हैं तो आपको एक ब्रोकर सब ब्रोकर के थ्रू ही आप देख सकते थे. और जो पूरा चेंजेस था ट्रेडिंग का वो हार्ड कॉपी चलान्स के थ्रू था. बट CDSL ने विद द हेल्प ऑफ द रेगुलेटर्स ये स्कीम लॉन्च की जहाँ पे एक इन्वेस्टर ऑनलाइन लॉगिन करके अपने डीमैट अकाउंट में अपने सब सिक्योरिटीज खुद व्यू कर सकता है. सिमिलरली द बाइंग एंड सेलिंग इज ऑल्सो ऑनलाइन. वो हाथ से भर के चलान्स ब्रोकर को दे दो, फिर ब्रोकर उसको नोट करेगा, रिकॉर्ड करेगा, वो सब सिस्टम खत्म हो गई. सो दैट वाज एक्चुअली द डिजिटलाइजेशन of the securities market. 2012 में CDSL Ventures launch हुआ, which was the first and largest KRA KYC registration agency of India. And in 17 it became listed and was the first repository to cross 3 crore demat accounts in 2020. और वहाँ से there's no looking back, as now we have more than 15 crore demat accounts. That is 5x in a matter of 4 to 5 years. So that is the kind of record numbers we are looking at. A quick snapshot of the 3 subsidiaries. So in CDSL Ventures, they have a 100% holding. So now they have almost 9 crore KYC records done in this country. And it also provides RTA services to 2,638 companies. CDSL Insurance Repository हमने already बात की. And the partnership is with 45 life and health and general insurers. यहाँ पे life, health, motor vehicle सब कुछ टाइप के इंश्योरेंस पॉलिसीज इनके पास स्टोरेज है. दे आर होल्डिंग मोर देन 18 लाख पॉलिसीज एंड देयर इज नो चार्ज डायरेक्टली टू द पॉलिसी होल्डर्स, विच इज अ पॉजिटिव. CDSL कमोडिटी रिपोजिटरी की हमने बात की, विच फैसिलिटेट्स ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ कमोडिटी एसेट्स इन इलेक्ट्रॉनिक मोड्स. CDSL बिजनेस के नंबर्स के लास्ट फ्यू क्वार्टर्स के लेट्स हैव अ लुक. सो पर क्वार्टर सिंस Q4 FY24 1 करोड़ से भी ज़्यादा रेगुलरली न्यू अकाउंट्स वेर गेटिंग ओपन विच आर ऑफ बेनिफिशियली ओनर्स. सो 1 crore 9 lakhs, 99 lakhs, 1 crore 18 lakhs, 92 lakhs. And of course in H2 we had seen that due to various reasons the market was witnessing a correction, and due to that the overall business came down because जनरली मार्केट करेक्शंस में क्या होता है कि पार्टिसिपेशन कम हो जाता है. पार्टिसिपेशन कम हो जाता है तो बाइंग सेलिंग कम हो जाता है. So people don't have that much motivation to continuously take trades because they end up to be loss making trades. Cumulatively आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 11.56 crores से 15.3 crores तक in the last 4 quarters it has gone. The value in lakh crores of the demat custody is 71 lakh crores. So 64 से 78 का पीक हुआ था and now it is at 71, and in the next year we surely will see new peaks. Number of issuers now. So जो कंपनीज या एंटिटीज जो सिक्योरिटीज को इशू करते हैं कैपिटल मार्केट्स में,
उनको इशूअर्स बोला जाता है, एंड देयर आर 35,922 इशूअर्स जिनको सर्विस CDSL प्रोवाइड कर रही है एज ऑन 31 मार्च 25। सो आपने देखा रहेगा कि दिस इज द ट्रू डिजिटलाइजेशन ऑफ द इंडियन कैपिटल मार्केट्स। सो यहाँ पे टेक्नोलॉजी इज ऑब्वियसली द की, एंड दिस इज वन क्विक स्क्रीनशॉट ऑफ द अर्निंग्स कॉन कॉल, जहाँ पे इट हैज बीन एम्फसाइज्ड that there's a lot of technology spend which is on a continuous basis. So किसी प्रोजेक्ट की तरह नहीं है, the process of building, consolidating, upgrading, accessing newer tools, newer techniques to do all this, ये बैकग्राउंड में चालू ही रहता है। And most important part, not only you have to store all this, share all this, change all this, but ensure the securitization of that. So lots of innovative services have got introduced in India in the last 10 to 15 years. So जैसे एक जगह पे कंसोलिडेटेड आपको आपका इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज देखने को मिलता है, 4 जगह पे नहीं जाना पड़ता, इलेक्ट्रॉनिक KYC हो जाता है, ऑनलाइन ही आपका मार्जिन प्लेज हो जाता है मार्जिन फंडिंग के लिए, EAGMs हो जाते हैं, दैट इज एनुअल जनरल मीटिंग्स ऑफ कंपनीज, इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल लॉकर एंड द बैकएंड ऑफ CDSL स्टोरेज वो भी हो गया है, एंड E-nomination हैज ऑल्सो टेकन प्लेस. So these are quantum leaps in the India digital story. If you look at the split of revenues, there are 5 main components. Some of them are directly linked to the market activities or the volume of the market activities, and some of them are mixed or not directly linked. So only the first one, which is the annual issuer income, which is coming from the issuing companies, वो directly linked नहीं है. इसलिए last year आप देखोगे in various quarters it has steadily gone up. यानी H2 में जब ट्रेडिंग एक्टिविटी कम हो गई तो भी ये इनकम इनकी ऊपर ही गई है. सो इट इज नॉट रियली लिंक टू द मार्केट एक्टिविटीज. ट्रांजैक्शन चार्जेस ऑब्वियसली डायरेक्टली लिंक टू मार्केट ऑपरेशंस. कॉर्पोरेट एक्शंस, IPO रिलेटेड स्टफ अगेन डायरेक्टली लिंक्ड. जो आपका Q2 में 52 पे गया था वो डायरेक्टली Q4 में 25 पे आ गया. एंड देन यू हैव ऑनलाइन डेटा चार्जेस विच हैज अ डायरेक्ट or an indirect link. So हमने mixed बोला है इसको, which is usage based. And then there is other income which has a kind of correlation on some elements and kind of no correlation on other elements. If you let's look at the expenses. Do they have a direct link to the business? So हमने देखा कि ये जो 2-3 टाइप के expenses है, जैसे employee costs है which have steadily risen through the year, IT cost है जो हमने emphasize किया that always is an investment that has to be done continuously for upgradation and securitization. Similarly आप SEBI, PF ये सब देखोगे तो ये भी इनके regulatory fees है. To some extent it is market linked, and these two are certainly admin, tax, no direct link to the market. So in a way the expenses have been growing faster due to the high growth, but at the same time not completely correlated. So change in sales can be on the high side, but operating income may not rise as much as the sales as a percentage. This is a snapshot of the profit and loss account. यहाँ पे आपको sales growth के numbers देखने को मिल रहे हैं which are very high, maybe a CAGR of around 35-40% for the last 4 to 5 years. Operating margin, as we said, is pretty high, and the company has been giving a dividend payout which is very healthy. Balance sheet में आप देखोगे तो in the August 2024 they had approved a issuance of bonus share. इसकी वजह से इक्विटी कैपिटल की वैल्यू डबल हो गई है because the bonus shares ratio was 1:1. And you see a lot of accumulated profits in the form of reserves on the balance sheet which have been invested into various types of investable assets like bonds, debentures, government securities, and it is also carrying around 32 plus 142 crores of cash and cash equivalents on the balance sheet. So overall a very healthy, cash rich, strong balance sheet. Let's look at the valuations. So somewhere in mid 21 they touched a PE of 75-76 which turned out to be a kind of peak, and after that they have seen a steady erosion of the PE right up to 34-35 by March 23. After that again there was a journey which again took it to the same levels of 75-76, which has again acted as a strong resistance or a barrier for further taking it up. Again it went down to 40, and then now again it tried to cross 70.
So all in all, a PE of a cash-rich, high-growth company seems to be fair in the range of 40 to 45, at best 50. जब भी ये 50 के आगे जाएंगे, ये ओवरवैल्यूड लग रहे हैं based on the last 4 years growth as well as the average price earning multiples that we have seen. So median is around 47.6. So investors इसको देख सकते हैं कि जब भी इसका प्राइस अर्निंग मल्टीपल 50 क्रॉस होता है तो ये ओवर प्राइस जोन में है, जब भी ये 45 के नीचे आता है तो वो अंडर वैल्यूड जोन में है. ग्रोथ लीवर्स आर मेनी. डीमैट पेनिट्रेशन बढ़ रहा है. द लिस्टिंग्स इन द मार्केट्स हैव गॉन अप, record highs in 23 and 24. As we speak now, again it seems the IPO season is coming back from April 25. कॉर्पोरेट एक्शंस जैसे जब डिविडेंड डिक्लेयर होते हैं, बोनस है, स्प्लिट्स, बायबैक्स, वहाँ पे भी काफ़ी सारा काम मिलता है फॉर कंपनीज लाइक CDSL. KYC, E-KYC जो बार बार आजकल ऑल फाइनेंशियल एंटिटीज मांगते रहते हैं, वहाँ पे भी अगेन एंड अगेन CDSL गेट्स बिजनेस. इंश्योरेंस रिपोजिटरी एंड कमोडिटी. So the size of opportunity in insurance was highlighted by the management कि some 30 crore policies have been issued and अभी तक इन्होंने जो e-policy storage है इनके पास 2 करोड़ का है. Means more than 90% of the market is still up for grabs for a company like CDSL. And वहाँ पे भी they see a big growth opportunity in the next 5 years. CDSL versus NSDL, this is a comparative table because as we said it is a duopoly, so not much to choose for the participants. Year of incorporation आसपास है. CDSL was promoted by BSE, NSDL by these multiple entities including NSE. Market shares, CDSL is very high at 79, so typical 80-20 kind of market. Active accounts we have already seen for CDSL, NSDL it is 4 crores. But the quantity in demat custody, you see a sharp difference over here. यहाँ पे 86,000 है, यहाँ पे almost 5 lakhs है. Hence, the value of these demat documents in custody is 71 and 495. In spite of that, CDSL enjoys a much higher margin compared to NSDL. So NSDL turnover or the revenue is higher by 50%, but CDSL margin is much more. NSDL का IPO बहुत जल्दी आ रहा है, ऐसे rumors है, and if the market cap is 16,000 crores, it translates to a PE of 46x. So CDSL is currently trading at 67x. So based on the margins, these seem to be the price earning multiples as of now. SWOT analysis, we have seen quite a few strengths. First of all, it plays a critical role in India's capital markets alongside stock exchanges and clearing corporations. High operating margin, low capex requirements, the best kind of business that you can have, riding on the conditions that are already there in the capital markets, which is very high growth. The weaknesses include a business model which is heavily regulated by SEBI's policies and subject to the changes in pricing regulations. Core business revolves around the Indian capital market, so limited diversification across geographies. Highly vulnerable to data breaches or system downtimes. हमने बार बार देखा है पिछले कुछ सालों में कि as digitalization across the globe has gone up, hacking and cyber threats have become a reality. आप कितना भी ट्राई कर लो, ये सब रेगुलरली न्यूज़ रिपोर्ट होते ही है. सो दैट्स अ रियल रिस्क टू द फाइनेंशियल सिस्टम एंड द कैपिटल मार्केट्स थ्रू CDSL. अपॉर्चुनिटीज इंक्लूड राइजिंग रिटेल पार्टिसिपेशन जो हमने देखा है. SIP inflows have also gone up 4 to 5 times in the last 5 to 6 years. More companies are coming up with IPO and dematerialization of shares. And shares छोड़ के बाकी भी there are businesses which are going for rematerialization. Rising adoption of digital signatures, e-voting, e-AGMs, etc., which all turn out to be great opportunities for CDSL kind of business. Threats include that in a heavily regulated business, कल सेबी ने अगर कहीं पे भी फीस कैप कर दिए, चेंज कर दिए, रिड्यूस कर दिए, we have a high impact on the margins. The margins are also very high. Transaction based revenue में sharply decline whenever there are market downturns. ग्लोब के हिस्ट्री में हमने देखा है कि देयर आर टाइम्स व्हेन द मार्केट्स कैन बी बुलिश फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट मेनी टाइम्स इफ दे गेट बेरिश आफ्टर अ वेरी लॉन्ग बुल रन, then they can be bearish for quite some time. So those will be the times when CDSL cannot influence any growth in its business. It will just have to deal with a declining business. And most importantly, जैसे हमने expenses में भी देखा, they have to continuously keep on investing irrespective about growth or degrowth.
सो ये इनका चालू ही रहेगा टू अवॉइड एनी obsolescence और breaches in the tech. So this is all we have for CDSL. Hope you liked our video. Please do write in the comment section. Thank you.